Hi everybody, how are you? Welcome to Juhi's Verbal Classes. So in this video, we are going to quickly revise some important rules pertaining to sentence correction, which should be very useful in Snap. So let's get started. Before we begin, let me quickly introduce myself. My name is Juhi Narula. I have 12 years of experience in training students for CAT, GMAT, and GRE. I also happen to be a life skills coach and a content creator. I've done my bachelor's in technology and master's in business administration. This is our Telegram channel. So finally, we have identified how to create a Telegram channel. So you're all invited. We will be ensuring that we post regular content. So please join the Telegram channel and ask your friends also to do so. So when we talk about sentence correction, it is important that you identify that when there are multiple answer choices provided, what would be the expectation from the correct answer. So the correct answer should rectify the existing error, should not introduce any new error, should not change the intended meaning of the sentence, and it should be the most concise version. So it means that there should be no redundancy or repetition of information. However, if there is one answer choice which is crisp but grammatically incorrect, and there is another choice which is lengthy but is grammatically correct, so you're going to go for the lengthy choice which is grammatically correct. So the order to decide would be: first it should be grammatically correct, then the meaning doesn't change, and if both the criterias are satisfied, then go for the third check, which is to pick up the answer which is in fewer words, right? So now further, when we proceed, how should we strategize to solve the question? So it is very important to read the initial sentence and look for the error. In case you're able to identify the error, eliminate the answer choices which are reflecting that particular error. Now, if you are able to eliminate two, then with the rest of the answer choices, do process of elimination. Look that either a new error is being created, or the meaning is changed, or check for redundancy. And you keep on repeating the steps till you reach to one unique answer. Okay. Now, the first thing that we talk about is subject verb agreement, very crucial. No matter how many times we touch base on this concept, it is still important that we revise it before we go for the exams, because it's a very crucial and important concept. So the simple rule says that if the subject is singular and the verb is singular, then if the subject is plural, then the verb is plural. Now, at times, what happens is that the subject is made distant with the verb, and that's where the confusion starts. We will take a look at that particular instance also. Before that, let's quickly see this particular example. So, professor is singular, hence the verb demonstrates is singular. Please keep this in mind that all the verbs that end with s are singular verbs. Take a look at the next example. The professionals demonstrate the idea well. So professionals is plural, hence the verb is plural. S ending verbs are singular. The verbs which do not end with S are plural. So do not get confused here. This is one major area of confusion. Avoid that. Right? Further, like I was discussing, that at times the subject is made distant with the verb with the help of a prepositional phrase in order to create confusion. So, what is the prepositional phrase? If you can see this example, the danger with many products is that they harm children. So, with many products is a prepositional phrase. Group of words that begin with the preposition, you call it a prepositional phrase. Are you able to see with many products? So, with is a prepositional phrase, and it with is a preposition, and with many products is a prepositional phrase. Take a look at the second example. Several polls on this particular problem have been taken. So polls is the plural subject, hence the verb will be have. At times what happens is students incorrectly identify problem as the subject, and then make the verb has a singular one, and there lies the mistake. So please do not do this. The prepositional phrase should not impact your choice of verbs. The subject is going to agree with the verb, not the noun, which is a part of prepositional phrase, right? So please keep this in mind. Very frequently, this rule is tested.
Further, when we proceed, please take care that whenever we are combining two singular terms, like the example that you can see, Angelina Jolie and Brad Pitt, with these four phrases, the phrases are there in front of you, accompanied by, along with, together with, as well as, then in that case, you need to see that the verb is going to be singular in nature. So yes, we are having two subjects, but whenever two singular subjects are combined with accompanied by, like you'll see this example, Angelina Jolie together with her husband Brad Pitt is arriving to the party, right? So we have two people, Angelina Jolie and Brad Pitt, but since this combination is with the phrases that we have just discussed, the verb is going to be singular. However, if you would have combined Angelina Jolie and Brad Pitt by simply using a conjunction and, then in that case, the verb is going to be plural in nature. So at times, both these sentences are provided and students get confused. So now you know that whenever you are combining two singular terms with and, the verb goes plural. However, if you're combining two singular terms with together with, along with, as well as, accompanied by, then the verb is singular in nature. Further, let's talk about gerunds. So, gerunds, verb first form plus ing, when acts as a subject, you call it a gerund. So, standing in the water was a bad idea. So, standing in the water is the subject, and gerunds usually take singular verbs. Smoking is injurious to health. Trekking is an adventurous sport. Cooking is fun. Dancing is my hobby. Simple rule. Just remember what are gerunds. Verb first form plus ing. When acts as a subject, you call it a gerund. Okay. And gerund takes singular verbs. Further, will we proceed? Please understand that whenever we talk about collective nouns that are representing one unit, so usually the verb is what? The verb is singular in nature because the subject is singular. You're talking about one unit as a whole, right? Now, when we come to the next set of rules, we talk about pronouns. But before that, this particular rule associated with pronoun is usually taught along with subject verb agreement. Pronouns are replacers, that are the words that you use instead of nouns. So when we talk about pronouns, you need to understand that the pronouns which are indefinite, like somebody, someone, anybody, anyone, anybody, these are considered to be singular in nature. Hence, the verb associated with them would also be singular. Okay. So please don't forget this rule and keep learning. Further, let's talk about the next segment of rules that we are going to learn, rules pertaining to pronoun ambiguity. Pronoun ambiguity is a very important concept. So here we are going to learn the rules pertaining to pronoun usage, and also I'll teach you what is pronoun ambiguity. This is a quick, crisp video. However, we will be doing detailed sessions on all these concepts. You can be, please follow our channel, and we have already covered subject verb agreement in detail, and we would be completing these concepts in detail also. It is just that snap is approaching, so this session acts as a capsule session so that you have all the rules at one place and it becomes easy to revise, right? So let's take a look at this particular rule. It is a very simple rule. There is no rocket science here. When you use a singular pronoun to replace a singular noun, and you use a plural pronoun to replace a plural noun, that's very simple, right? For Juhi, I'm going to use she, and for people, I'm going to use they. So there is no rocket science here. Just be clear that if a singular pronoun is there, singular pronoun is used for a singular noun, and a plural pronoun is used to replace a plural noun, right? Further, when we proceed, whenever we are combining two singular terms, like take this example, you're combining officer and inspector, both these are singular terms. But before these singular terms, if you place each or every, right, each or every, then the pronoun is singular, right? Slightly confusing. You're combining two singular terms, and before the singular terms, if you place each or every, then the pronoun is going to be singular in nature. Let's take the look at the example. Each officer and every inspector was in his duty, right? So we are putting his here. So officer is singular, inspector is singular, but we are placing every before both of the singular words. Hence the pronoun is going to be singular. Okay.
Further, when we are expressing a negative idea, then the sequence of personal pronouns should be, what are personal pronouns? I am speaking, so I am the first person. You are listening, you are the second person. And if you're talking about Sharon, then Sharon becomes the third person, right? I am speaking, I am the first person. You are listening, you are the second person. And if you're talking about somebody, that becomes the third person, right? So if you are presenting a negative idea, then the sequence of expressing a negative idea would be first person, second person, and third person, right? So you, she, and I will be punished for the wrong action. Punishing, punishment is a negative idea, so the correct sequence would be I. So the one that you can see written in green, that is basically the correct sequence. First person, you second person, and she, that's a third person. That's how you arrange the personal pronouns, right? Now what do we do when the idea is positive? When the idea is positive, the sequence of the personal pronouns should be second person, third person, and first person, right? So please take care of these important rules. When there are speed based questions, that simple rules can be checked, and these questions are quick to solve. So if you will know the sequence, your life will really become easy. Now, whenever you're combining two singular nouns, let me tell you, two singular nouns with or, neither nor, either or, the pronoun is generally singular. What happens to other variations, we are soon going to learn. So, Robin, Roneth, both are singular, and you're combining with or, then the pronoun is going to be singular in nature. Please keep this in mind. Now, if it happens, that if the pronoun, if one subject is singular and other is plural, what are we going to do? We are soon going to explore. Another rule, whenever we talk about apostrophe, apostrophes are used to show possession. Like if I demonstrate a simple example to you, like I'll demonstrate this example, Juhi's pen. So apostrophe s is used to show possession or belongingness. So usually with nouns we use apostrophe. So this says Juhi ka pen. That's what the phrase is trying to explain. But when we say his car, or when I say her pen, so her is already showing possession. So in that case, you don't put an apostrophe. So possessive pronouns, what are possessive pronouns? That show possession, his, her, our, yours. These are possessive pronouns. So possessive pronouns will not take an apostrophe. Please mark it. Again, a quick question that you can encounter. Further, like I was talking about this rule, that when you are combining two singular nouns by or, neither nor, either nor, the pronoun is going to be singular. Now, what happens if you are combining one entity which is singular and other entity which is plural? Then the pronoun is plural in nature, right? So if one is singular, other is plural, then the verb is plural in nature, right? Further, if we proceed, when we talk about the usage of each other is used to refer to two persons or things. One another is referred to more than two persons or things. Like I say, Bert and Dorothy are always fighting with each other. So there are two people who are fighting. Now, if I say all the countries of the world are always fighting with one another, so all means they are more than two, and we are talking about, a greater number. So if there's just two, you use each other, and if there are more than two, you use one another, right? Further, when we talk about relative pronouns are those pronouns that combine. So relative pronoun who is used for persons only. So the person who is honest is trusted. Like if I say, um, my English professor is Dr. Subramaniam. He's a sincere fellow. Now, if I need to combine both these statements, I'll say Dr. Subramaniam, who's my English professor, is a sincere fellow. So we are using who for people, which you use for lives, for things without life and animals, and which can also refer to a previous statement. Let's see how. This is the cat which my dad bought on my birthday. So since we're talking about cat, it's an animal. So we are going to use which. And the third case, Shelley said she saw me in the museum, which was a lie. So which can also refer to the previous statement. Further, very important concept which we where we talk about pronoun ambiguity. So pronouns are replacers. Pronouns are words that you use instead of nouns. So
the simple rule is that for whatever noun you are using the pronoun, it should be easy to identify. In case the pronoun is not able to give clarity as to which noun it is referring to, you call it ambiguity. Ambiguity means something which is not clear. Take a look at this example. Miss Jolly gave Sandra her perfume. So in this case, we are not sure whose perfume is this, Jolly's perfume or Sandra's perfume. Hence, this becomes an incorrect statement or a statement where pronoun ambiguity occurs. It can be Jolly's perfume, Jolly gave her own perfume to Sandra, or it can be Sandra's perfume, which Jolly might have taken and is returning, right? So please keep a check here that you don't make such an error. Another thing, that whenever you are using a pronoun, the term should be explicit. Implied idea के लिए आप pronoun नहीं use करोगे. Mr. Allen is an over enthusiastic man, but he effectively keeps it hidden. तो it क्या है यहाँ पर? It anger है या it enthusiasm है, सॉरी, it इस केस में enthusiasm है. अब enthusiasm तो है ही नहीं सेंटेंस में, तो आप एक प्रोनाउन यूज कर रहे हो उस नाउन के लिए जो सेंटेंस में है ही नहीं, राइट? सो दैट कैन नॉट बी लॉजिकली फिजिबल. आप अपने लॉजिक को एक बार रिविजिट करिए कि ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं कि मेरे पास एक प्रोनाउन है पर सेंटेंस में उसका नाउन ही नहीं है. तो वो तो बेसिक डेफिनेशन ही फॉलो नहीं होती, राइट? तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इम्प्लाइड आइडिया को रेफर नहीं करेगा, जबकि आप जब लॉजिकली इंटरप्रेट करेंगे तो आप कहेंगे ठीक तो है, हाँ इंथुजियाज्म को ही रेफर कर रहा होगा, बट वी कांट यूज अ प्रोनाउन अंटिल द वर्ड enthusiasm is present in the sentence, right? So I'm sure you are clear with pronoun ambiguity. Now let's move to the next concept. If you're finding this too intimidating, I would ask you to watch this video in pieces, right? Maybe one day you can, one in the morning session, whenever you're studying, you can revise the rules of subject verb agreement. Evening you can do pronouns. Next day you can do parallel structure if you're finding it too much. But the idea was to make one video for you which is, wholesome, right? So, parallel structure is a very interesting concept which is driven by conjunctions. Conjunctions are words that link, coordinate, or combine two or more similar words, phrases, clauses into one fluid idea, right? So, under coordinating conjunctions, we keep and, but, or, nor, right? सो पैरेलल स्ट्रक्चर सेज कि जो भी आप दो एंटिटीज, दो या उससे ज्यादा एंटिटी को कंबाइन करते हो, उनका ग्रामेटिकल फंक्शन सेम रखो. मतलब तुम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करो, दोनों या तो नाउन हो, दोनों या तो प्रोनाउन हो. अगर दोनों वर्ब्स हैं तो उनके टेंसेस सेम रहें. कुछ एग्जांपल से देखते हैं. टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय कंजंक्शन. तो देखिए यहाँ पर एंड कंजंक्शन लिया, लॉरा और सिस्टर दोनों नाउन्स हैं, या और से कंबाइन किया, रॉजर और बेथ को, दोनों नाउन्स हैं. यहाँ पर हमने एंड से दो वर्ब्स को कनेक्ट किया, माइकल रेज्ड हिज हैंड एंड आस्क्ड अ क्वेश्चन. तो आप ध्यान रख रहे होगे कि दोनों का टेंस सेम है, इस चीज का ध्यान रखिएगा. यानी कि दो, जो भी आप एंटिटीज, दो या उससे ज्यादा भी एंटिटीज कंबाइन करते हैं, उनका ग्रामेटिकल फंक्शन सेम रखिए. मतलब आप एक एडवर्ब और एक वर्ब को कनेक्ट नहीं कर सकते. दोनों या तो एडवर्ब्स हों, दोनों एडजेक्टिव्स हों, या दो से ज्यादा हों, तो जो भी एक एंटिटी का फंक्शन है वही बाकी एंटिटीज का फंक्शन रहे. नाउ सी, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ गया, टू इन्फिनेटिव वर्ब्स. तो इन्फिनेटिव क्या होता है? टू, टीओ के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा लेते हैं, ठीक है? जैसे देखो, द रिपोर्टर वांट्स टू गो एंड टू इंटरव्यू द सेलिब्रिटी. तो आप एंड के साथ एक इन्फिनेटिव को कनेक्ट कर रहे हो दूसरे इन्फिनेटिव को. सिंपल टर्म है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के कॉम्बिनेशन को आप इन्फिनेटिव कहते हो. तो देखो, टू गो और टू इंटरव्यू दोनों ही आपने इन्फिनेटिव्स लिए. आप चाहो तो आप बाद वाले टू को ओमिट कर सकते हो, इसको ग्रामेटिकल एरर नहीं माना जाता. अब ये देखिए, द सिंगर्स वॉइस वॉज टेंडर बट स्ट्रॉन्ग. तो हमने दो एडजेक्टिव्स को कंबाइन किया. द केक वॉज टेस्टी एंड स्वीट, हमने दो एडजेक्टिव्स को कंबाइन किया. द thief walked softly and quietly, हमने दो एडवर्ब्स को कंबाइन किया, राइट? सो वट एवर टू एंटिटीज वी आर कंबाइनिंग, द टर्म्स आर कीपिंग द सेम ग्रामेटिकल फंक्शन. नाउ ये आपने एक वर्ड देखा, कई बार कोरिलेटिव मतलब पेयर्ड कंजंक्शंस भी कॉम्बिनेशंस के लिए यूज करते हैं. तो ये चार फ्रेजेस हैं और मेजरली क्वेश्चंस इन्हीं से ड्रिवन होते हैं, तो इनको लिस्ट डाउन करके कहीं रख लीजिएगा. बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और. तो देखते हैं कैसे काम करता है. अगर आप
इनका भी यही रूल रहेगा पैरेलल स्ट्रक्चर में कि जो भी आप दो एंटिटीज कंबाइन करेंगे उनका ग्रामेटिकल फंक्शन आप सेम रखेंगे, राइट? इस चीज का आप खासकर ध्यान रखेंगे। और आप जब बोथ और एंड से कंबाइन कर रहे हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा। जब आप नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर और नाइदर नॉट से कंबाइन करते हैं तो जो एंटिटी या जो नाउन वर्ब के करीब है उससे डिसाइड होगा कि वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, एग्जाम्पल से सीखो। देखो, नॉट ओनली सूसी, सूसी को कंबाइन किया, हर फ्रेंड, दो एलिमेंट्स कंबाइन किए, सूसी और फ्रेंड, दोनों एलिमेंट्स क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या रहा, सिंगुलर। वर्ब के पास वाला एलिमेंट सिंगुलर था इसलिए वर्ब सिंगुलर है। सेंटेंस को स्लाइटली ट्वीक किया है, नॉट ओनली सूसी बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स आर कमिंग, तो वर्ब के पास कौन सा नाउन है, प्लूरल, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, राइट? सो फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए आर प्लूरल प्लूरल था। आप यही रूल नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, आइदर और के साथ भी अप्लाई करेंगे। तो जो वो वर्ब के पास वाला नाउन है उससे डिसाइड करो कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अगर वर्ब के पास वाला नाउन सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर वर्ब प्लूरल, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है? So these are some simple examples to tell you that my best friend took me to dance and a show. तो देखिए, dancing तो gerund हो गया, राइट? और टू अ शो, और यहाँ पे देखिए डांस एंड अ शो, तो ऐसे सेंटेंस बनाइए। माई डॉग नॉट ओनली लाइक्स टू प्ले फेच बट ऑल्सो लाइक्स टू चेज कार्स, राइट? सो दैट्स हाउ यू आर मेकिंग द सेंटेंसेस पैरेलल। Now let's come to the next concept which is misplaced modifiers. तो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब से ड्रिवन कॉन्सेप्ट है। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स प्रोनाउंस को क्वालिफाई करते हैं, और वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब्स को क्वालिफाई करते हैं, राइट? देखिए कैसे। अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है, वर्ड, I let me put you, word, phrase or clause that offer description, right, that qualifies, that functions either as an adjective or as an adverb, हम उसको नाम दे देते हैं modifier। तो आप ये एग्जाम्पल देखो, gazing out the window Ross missed the homework, so who was gazing out the window, रॉस। तो ये जो रेड में मार्क्ड है ये मॉडिफायर, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि रॉस क्या कर रहा है, गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। इन्वेंटेड बाय एडिसन, सो ये टच किसको कर रहा है, बल्ब को, सो व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय एडिसन, बल्ब, right? So I'm sure you are clear with the modifier now. So let's see what is a misplaced modifier. अगर modifier right word को touch नहीं कर रहा जिसको वो describe कर रहा है तो उसकी placement incorrect है, इसलिए हमने word बना लिया misplaced modifier। यानी कहने का मतलब है कि जो भी modifier आप sentence में use कर रहे हैं, this should touch the right word it is tending to modify. Let's see how. Now see, she read from her new books wearing glasses. तो बुक को वेयरिंग ग्लासेस टच कर रहा है, कौन सी बुक ग्लासेस पहनती है, कोई नहीं पहनती ना, तो मिस्टेक समझ में आ गई। सो द करेक्ट वुड बी वेयरिंग हर ग्लासेस, शी, द लेडी वाज वेयरिंग द ग्लासेस, सो वेयरिंग हर ग्लासेस वाला फ्रेज शी को टच करना चाहिए, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज अ मिसप्लेस मॉडिफायर। अब कैसे फिक्स करोगे, मॉडिफायर को उस टर्म के पास ले आओ जिसको वो मॉडिफाई करना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल से सीखो। The farmer wanted to hire someone to take care of his horse who doesn't smoke or drink. तो ये who doesn't smoke or drink ही तो horse को टच कर रहा है। मैंने देखा है कोई घोड़ा जो दारू पीता हो या ड्रिंक करता हो, नहीं ना। So this is a modifier and it's not rightly placed. So farmer sentence का intent क्या है, उसको hire करना चाहता है, the person who is going to hire for help, that person should not smoke or drink. तो आप बस कुछ मत करिए, फ्रेज को उसके पास, मॉडिफाइंग फ्रेज को उसके पास लगा दीजिए। So the farmer wanted to hire someone who does not smoke or drink to take care of his horse. Okay. फर्दर एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर। ये क्या है, डैंगलिंग मॉडिफायर का मतलब है कि आपने एक मॉडिफायर यूज कर रखा है बट जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है वो सेंटेंस में ही नहीं है, राइट? देखो कैसे। जैसे मैंने तुमको कहा वाइल स्लीपिंग द फोन रैंग, तो वाइल स्लीपिंग फोन को टच कर रहा है, राइट? अब फोन तो नहीं सो सकता, प्लीज ये एक्सक्यूज मत दो कि मैम मोबाइल फोन को साइलेंट कर देते हैं, स्लीपिंग मोड में डाल देते हैं, नहीं। लॉजिकली देखो, मतलब इंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट देखो, तो कौन सो रहा है ये सेंटेंस क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा, तो आप इस एरर को कैसे रेक्टिफाई करोगे, आप एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दो। वाइल
आई वॉज स्लीपिंग, या शी कर दो या रोहन कर दो या मार्क कर दो, the phone rang. So in that case, this while sleeping is what? A phrase. राइट इसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? एक क्लॉज में. क्लॉज क्या होता है? जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है. राइट तो जैसे ही आपने एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया या नाउन इंट्रोड्यूस कर दिया, सेंटेंस रेक्टिफाई हो जाएगा. राइट सो ये देखो, एक और एग्जाम्पल लो. रीडिंग अ बुक बाय द विंडो माई कैट जम्प्ड ऑन टू माई लैप. सो इसके हिसाब से तो कैट बुक को रीड कर रही थी बाय द विंडो, वो तो नहीं हो सकता. तो कौन बुक को रीड कर रहा था यहाँ पे डाल दो. वाइल आई वॉज रीडिंग अ बुक बाय द विंडो माई कैट जम्प्ड ऑन टू माई लैप. ओके. सो देन वी कम टू idioms एंड phrases. देखिए idioms एंड phrases के लिए आई एम ऑल्सो पुटिंग एन एफर्ट. मैं बहुत रेगुलरली फ्रेजल शॉर्ट्स डाल रही हूँ आपके लिए, ताकि आपकी लर्निंग थोड़ी आसान हो जाए. बट ये आपको याद ही करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग, और हमें ग्रुप भी क्रिएट, जैसे अपना चैनल भी क्रिएट कर लिया तो हम वहां पर भी वी आर पोस्टिंग द थिंग्स. अब आपको क्या करना है? ग्रेजुअल रिविजन करना है. ईडियम एक फ्रेज है या ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका मेटाफोरिकल मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग नहीं होता, और एक कॉमन बोलचाल में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और लोगों को उसका मतलब पता होता है. राइट. तो टू वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक का मतलब है कि आप आई मीन कोई डर्टी लिनन का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि something which is not acceptable, or something which should be, any fight or any mutual hatred is being discussed, any family issue which is not in a positive sense, you are discussing it with everyone, so that should not be done. To read between the lines मतलब hidden meaning को identify करो. तो इनके मेटाफोरिकल मीनिंग्स है, लोगों को बोल चाल में यूज करते हैं और लोगों को मतलब पता है. अब कई ऐसे ईडियम हो सकते हैं जिसका आपको मतलब नहीं पता हो, तो मैं ईडियम की लिस्ट टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज ज्वाइन कर लो. हम वहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज शुरू करने वाले हैं, तो यू शुड बी देयर. राइट. अब फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेजल वर्ब क्या है कि आपने वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन को लगा दिया और इसका एक डेफिनेट मीनिंग है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो एक्सेप्टेबल है. इसको फ्रेजल वर्ब कह देते हैं. राइट. दे आर फिक्स्ड एक्सप्रेशंस. राइट. अब इसका एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग भी नहीं होता. टेक ऑफ है, गिव अप है, ब्रेकअप है. अब यू नो दीज फ्रेजेस. अब एक्चुअली में क्या होता है कि कई फ्रेजेस का मतलब नहीं पता होता, या दो प्रेपोजिशन जहाँ पे वेरिएंट हो जाती है वहां पे मीनिंग ऑल्टर कर जाता है. तो फ्रेजल वर्ब्स भी याद करने पड़ेंगे. राइट. देयर इज नो अदर चॉइस, बट ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, आई एम रियली ट्राइंग हार्ड. बहुत फ्रीक्वेंटली हम वो कैप शॉट्स या फ्रेजल शॉट्स, इनफैक्ट इट हैज बिकम एवरीडे रूटीन, वी आर पोस्टिंग ऑन द यूट्यूब चैनल. ईडियम्स के एक लिस्ट में शेयर कर दूंगी. आपको करना क्या है कि आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है. तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है. राइट. मैंने क्लास के बिगनिंग में भी बताया था. तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सो दैट आर म्यूचुअल म्यूचुअल तो नहीं हो पाएगा, बट वन वे कम्युनिकेशन तो एटलीस्ट बिगिन. राइट. चलिए. सो कल लाइव सेशन है 7 PM पे. आपको करना क्या है? आपको ये पूरी क्लास रिवाइज करनी है, ताकि कल हम जब मिक्स बैग के क्वेश्चंस करें तो आप कंफर्टेबल रहें. And thank you so much for watching. Please do share. This is actually needed from you. There's a lot of effort that's going, and if more and more students can be benefited, that will be useful, right, for the student community. So please like, do definitely comment and share. Right. Please help me and help me spread the word, and ask your friends also to subscribe for the channel, YouTube channel, and also join the Telegram channel. The link is in the description. So happy Lodi, stay safe, take good care of yourselves. All the best. See you tomorrow at 7 p.m.